Okay, today we are going to learn about insects. Insects means kide. Okay, so we will learn about the insects, and we are going to learn about some common insects and their body parts and their life cycle. Okay, and some social insects, what are social insects, and useful insects and harmful insects, and remedies to prevent harmful effects of insects, and preventive methods to keep insects away. So these are the things we are going to learn today, okay, under this topic. Okay, and usually we see lot of insects around us, right? रोज हम बहुत सारे इंसेक्ट्स हम देखते हैं, ठीक है? क्या क्या इंसेक्ट्स हम देखते हैं? आप लोग जस्ट you can remember the can you see any of the insects around you, like bees is there, and the ant, butterfly, dragonfly, both sorry insects are, we can see them around us. Okay, and some common insects. What are the common insects? Insects are small creatures that are found almost everywhere, like in soil, air, on land, in water, even on plants and animals. So these insects are very small creatures. ये बहुत बड़ा जीवी या जीवी जंतु जो भी बता सकते हैं. It is very small creature. Okay, and इसको हम कई हर जगह में देख सकते हैं. ओके, मिट्टी में हम देख सकते हैं, हवा में देख सकते हैं, और ऑन ग्राउंड लैंड में, पानी के अंदर, और कई प्लांट्स और एनिमल के ऊपर भी हम इन इंसेक्ट्स को हम देख सकते हैं. ओके, एंड दे आर डिफरेंट इन साइज, कलर एंड फीचर्स. सी they every insect has its own color, its own size, and the features, different features. Okay, एंड्स देखो, फॉर एग्जाम्पल चींटी देखेंगे तो कितना बड़ा है, चाहे 10 साल भी हो इतना बड़ा ही होगा. ठीक है, मतलब कि इसका साइज बड़ा नहीं होता है. ठीक है, बट फ्लाइज देखो, हर एक अपना अपना होता है. देखो, डिफरेंट कलर्स, सी दिस कलर इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. All the colors are different, their sizes are different, and the features, see, body structure and features are totally different. Okay, some common insects, they are ants, bees, butterflies. Okay, then we have beetles, mosquitoes, flies, honeybees, grasshoppers. Okay, it can be seen in our surroundings. So normally we can see all these insects. That's why we call it common insects. It very very commonly we can see them around us. Okay, and body parts of an insects. So how the body parts? See, we as a human, we have different body parts. हमारे शरीर में अलग अलग अंग होती है. ठीक है, सेम वे every insects, हर एक कीड़े के अंदर different parts होती है mainly. Okay, and insects do not have bones like us. They have a hard outer covering on their body called exoskeleton, made up of chitins. Okay, so हमारे शरीर में देखा जाए तो हमारे अंदर बोन्स है. बोन्स जो है वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है. अगर मान लो हमारे शरीर में अगर बोन्स नहीं होता तो बिल्कुल वो ओनली मास रहेगा. टोटली वी विल नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर. ओके, ओनली the skeleton or the bone system gives us a body structure. Okay, if there is no bones, our body will look like a what we call, it is a simply, it will be a fleshly object. Okay, which will not have any shapes. Okay, but just like the human body, insects do not have the bone system, but they have a body hard covering, or they have a part that is called exoskeleton. Okay, exoskeleton. It is made up of chitin. It is a little covering with a little hard part. Okay, not that hard like our bones. It is a small hard layer of their body. Okay, an insect body can be divided into three main parts. One is head, thorax, and abdomen. So every insect's body can be divided into
three different main parts. Their head, thorax, and abdomen. See, so what are the things in head part? Head part contains two eyes, one mouth, and antenna. See, this is antenna. In mobile TV, you might have seen these kind of antennas in the olden days. Okay, nowadays there is no antenna system. This antenna, what is the use of antenna? It is not the same antenna which we use in the electronic devices. It is something different, and through this antenna, insects smell and feel the things. Okay, and with this, they can very easily smell the thing, and they can feel the things. Okay, and the different insects have different types of mouth. See, as for human beings, we all have the same kind of mouth. Okay, but compared with animals, see, dog is having different kind of mouth, cow is having different, and donkey. Okay, हर एक animal का अलग अलग मुंह होती है, ठीक है, different kind of मुंह. Okay, that is depend upon the food they eat. Okay, how they eat and what they eat, that is depend upon their food habit. The mouth is made up of in that structure. Okay, and the same way, the insects also have different kind of mouth setup and their um, what we call the head setup. Okay, we have eyes in our face in front view, but for animals you will see the side views, left and right you can see the same way, but in every insect there will be different kind of system, eye system, mouth system, and everything. And usually insects like butterfly and bees, they have a coiled feeding tube. So they have a coil type of feeding tube, which is coil means it is like a spring type. Okay, that kind of feeding tube. See, this is antenna, head. This middle part is called thorax. Okay, this thorax is the middle part that connects body part and head part. Okay, so the thorax is the middle portion of an insect's body. It bears wings and legs. Okay, see, in the middle part here only the wings and legs are connected. And some insects will have three, or some will have six. Sorry, three means they will have four legs or six legs. Some will have eight legs also. Okay, and okay, abdomen. See, the abdomen part is a back portion. Okay, it is a back portion of an insect's body. It contains the important organs like stomach, the heart, and the excretory system. So they have a body system like that is abdomen. See, this abdomen contains the stomach and heart. Okay, and this is the main part that we can see here on every insects. And the insects breathe through a special opening in both side of their body on thorax and abdomen. Okay, they have a two kind of openings that is called spiracles. Okay, and they are found in both side of thorax and abdomen. That is depend upon the insects. You got it? Okay, this is all about the body parts. Now moving on to the life cycle. Life cycle means, see, we as a human have a birth, then gradual growth, then we get into adults and we become old. Okay, that is the life cycle of human. Just like a human being, see, हमारे जैसे इंसान पहले पैदा होता है छोटे से बच्चे, फिर थोड़ा मतलब कि धीरे धीरे इनका ग्रोथ होता है और छोटे बच्चे और अडल्ट बनते हैं और बूढ़े हो जाते हैं. That is called our what we call the life cycle. So when we talk about the insects, insects also have their own life cycle. Okay, life cycle is the series of changes that happen to a living creatures over a course of its lifetime. All insects lay eggs that hatch into young one, and the young one grow into adults. See, most of the insects they lay eggs. Okay, छोटा छोटा अंडा डालकर फिर उसके बाद अंडे से यंग छोटा बच्चा निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होकर फुल्ली ग्रोन एक अडल्ट बन जाता है.
ठीक है, that is the growth and the development of insects. Okay, and here we have a picture of the life cycle of a butterfly. Okay, पूरा एक butterfly का life style यहाँ पर हमें दिया हुआ है. So through that we can learn it in little detail or how they are formed. See, butterfly have 4 stages in their lives. Okay, 4 stages. First one is egg. Okay, and second one is larva or caterpillar, and the third one is pupa. Okay, then fourth one is adult. Okay, an adult butterfly lays egg on leaves of the plants. So normally, where is their house? See, we live in houses, right? We have hospitals when delivery takes place. So it takes place in the hospitals. Usually, human beings, they give birth to the young ones, and most of the animals, okay, and humans. And but as for these insects, they lay egg. First, सबसे पहले वो थोड़ा मतलब कि plants की पत्ते के ऊपर अंडे डाल देते हैं. फिर उसके बाद they grow into larvas. Okay, next stage and third stage is pupa, and they become a butterfly, adult butterfly after this growth. Okay, there is a fourth stage. So that is how they develop into a adult one. This is from egg, and they come into the adult stage through this cycle. Okay, the egg changes into a larva. A caterpillar eats a lot of leaves and grow in size. Soon it sheds its old skin. The caterpillar sheds its skin many times and becomes a pupa. Then it forms a hard case around itself, which is called a cocoon. The pupa slowly develops into a butterfly inside the cocoon. After a few days, beautiful adult butterfly comes out from the cocoon. So, how the growth takes place as for human, what we do when we take birth, when we have birth, then we drink milk. Gradually, we have a growth. It will go on for 2-3 months. Then we will take a little liquid food, then solid food. Then slowly we will have a growth. But as for larva, this butterfly, after first they will lay egg, and the egg become they then larva comes from egg. Okay, and larva or caterpillar, they will eat lot of leaves. Okay, it is already the egg will be on the leaves, and when they become larva, they eat all the leaves. They will eat, and they become the next stage. They will grow into the next stage. During this stage, see, the outer layer will be removed many times. Okay, they eat up the leaves, and the outer layer slowly it will go on, and it will they sheds its own old skins. The old skin will be going away, and after that, and the caterpillar sheds its skins many times and become a pupa. The next stage is pupa. So it keep on sheds the skins and they become pupa, and then forms a hard case, like a, see, this is a hard case. So you cannot find the caterpillar, but it is inside. Okay, inside it is a safe growth. They grow into a beautiful butterfly, but it is not seen outside. Okay, and they grow inside. Okay, the case is called cocoon. Okay, what is the hard case around the pupa is called cocoon. Okay, and slowly they develop into a butterfly inside, and after few days, okay, and they become beautiful butterfly and come out. Okay, then some social insects. What are social insects? Social insects, they live together in group to get protection from their enemies and share food, work, and shelter. They are called social insects. Ants, bees, wasps, and termites are social insects. Social insects means ज्यादातर वो झुंड में रहते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते हैं. ओके, एवरी इंसेक्ट्स हैव इट्स ओन ग्रुप. लाइक एंट देखो, कभी भी चींटी अकेले जाएंगे तो भी थोड़ा देर के बाद देखा तो एक ग्रुप आ जाता है. ठीक है,
और bees, honey bees वगैरह, that also live in a group. So that is why they are called social animals. They live together with each other. They eat together, work together, and they stay together. That is why they are called the social insects. Okay, ants are the most common social insects. They live in colonies called anthills that consist of a queen, the male and female workers. Okay, only the queen ant can lay eggs. An colony may consist of numerous ants. They dig their anthills in soils, okay, and sand or hollow logs. They are generally found in areas such as near trees, on open grounds, under any appliances, and in the corner of our rooms. Okay, first we see about ants. Normally you can watch the ants. Ants को चींटी को देखो घर में कैसे रहते हैं, वो एक ग्रुप के साथ रहते हैं, ठीक है, वो अकेले नहीं रहते हैं, ग्रुप, और उसमें एक ही क्वीन एंट होता है, वो केवल अंडा देती है, ठीक है, उसके बाद उसमें मेल और फीमेल भी हैं, ओके, एंड they will have a group of ants, okay, they work together, and they have a very big number of group, इसमें बहुत ज़्यादा ants होती है, ठीक है, ants अकेले नहीं रहता है, ग्रुप में रहते हैं, ओके, एंड ant को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, हम लोग जनरली मिट्टी में, पेड़ में, और कहीं छुपा हुआ जगह कहीं भी मिलता है वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है. Then moving on to the next one, honeybees. Okay, honeybees lives in hives made of beeswax. So they also have one queen bee that lives there. The male bees are called drones. Okay, the worker bees collects nectar from the flowers to make honey and look after the queen. Okay, honeybees can grow in both natural and hand environments. They build their hives on rocks inside the cavities of trees or under the edges of objects. So next one is honeybees. This is also one of the social insects. Okay, and they live in hives. See, this is a, they only make it, वो खुद बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं, और उसमें भी देखा तो हनी में भी, हनी बी में भी एक फीमेल होती है, क्वीन कहला जाता है, वो केवल यज्ञ अंडे देती है, और जो मेल और मेल बी को हम ड्रोन्स कहते हैं, ठीक है, और देर आर सम अदर बीज, वर्कर बीज, ओके, काम करने वाले, वो जाकर मतलब कि हर एक फूल से थोड़ा थोड़ा हनी ले आकर इसमें बटोरते हैं, ओके, एंड दे लुक आफ्टर द क्वीन, okay, and they make these caves through on the rocks inside the cavities. Cavities means खराब पेट के अंदर, so बीच में जो जगह खाली जगह है उसके अंदर बनाते हैं, okay, and honeybees are also kept in man-made hives in forms to obtain honey and wax, which is called apiculture. So there is a even man-made hives also there. Even they live there. Okay, and they even there are a lot of garden. Many people they have gardens or farms in that. They make these kind of small hives, and where they put the honeybees, and after that they will take the wax. That waxes are used for our making this what we call crayons and all. Okay, a lot of things they make it out of these things. Useful insects. There are some insects which are very useful to us. They help us in various ways. Honeybees gives us honey and beeswax. Candles, soaps, and crayons are made with beeswax. See, I told you. Actually, there are some useful insects. Some insects are some कीड़े हमें काफी मददगार होते हैं. तो उनमें से है ये हनी बी. ओके, हनी बी के द्वारा हमें क्या मिलता है? हमें हनी मिलता है और बीज वैक्स. ये वैक्स के द्वारा हम क्या बनाते हैं? कैंडल्स, सोप्स, ओके, और क्रेयॉन्स जो कलरिंग वगैरह करते हैं, ये सारे कुछ इसके जो हीव्स के द्वारा, इसका जो डेरा जो है उसके द्वारा हम बनाते हैं, ठीक है. तो इसलिए ये काफी हमें मदद देती है.
और जो हनी जो है हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्योर हनी अगर मिल गया वो हमारे लिए काफ़ी हेल्थ के लिए मतलब कि काफ़ी मदद हो जाती है, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाइज फीड ऑन मस्किटोज दैट आर हार्मफुल फॉर अस। सो ये ड्रैगन फ्लाई जो है मस्किटो को खाकर जीते हैं। मस्किटोज नेचुरली हम जानते हैं ये हार्मफुल है, क्योंकि मस्किटो के द्वारा बहुत सारे बीमारी फैलती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर हेल्पर। ओके, दे डिस्ट्रॉय mosquitoes. Okay, silkworm gives us silk. So there is one more silkworm, insect that is called silkworm. Through silkworm we get silk. Okay, and I think you can learn it in an English lesson. Okay, there is a lesson. Okay, silk. Beetle feed on dead plants and animals and help us to clean up our environment. So beetles. So these are also small insects, and they clean up the dead items like dead plants, dead animals. Okay, so they will eat it up and they will clean the environment. Otherwise, everything will be इधर उधर सड़ा हुआ चीज हम देख सकते हैं। तो ये beetle की वजह से सारे कुछ वो क्लीन अप हो जाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स आर यूजफुल टू अस, नॉट ऑल द इंसेक्ट्स, सभी इंसेक्ट्स हमारे लिए यूजफुल नहीं, लेकिन कुछ यूजफुल वाला है। लेकिन जब जब हम यूजफुल देखते हैं तो हार्मफुल इंसेक्ट्स भी हैं। मेनी इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू अस, so they cause harm to plants and as well as animals. They can harm us in many ways. So there are some insects, कुछ कीड़े हैं जो हमारे लिए नुकसान देती है। और क्या क्या है, एक तो मस्किटोस। मस्किटोस जो बाइट है, मस्किटो बाइट के द्वारा हम लोग काफी डिसीज हमारे अंदर आ जाते हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू। ये सारे बीमारी मस्किटो के द्वारा फैलते हैं। और फ्लाइज जो मक्खी होती है, इसके द्वारा क्या होती है, मक्खी और कॉकरोच, घर में कॉकरोच होते हैं, उसकी वजह से वो भी हम बहुत सारी बीमारी हमारे अंदर आ सकता है, क्योंकि ये ब्रिंग्स इन्फेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, एक जगह से दूसरा इन्फेक्शन को ले आते हैं, उसके वजह से ये कई जगह अलग अलग जगह में गंदगी में बैठता है और ऊपर खाने में बैठता है, हमारे ऊपर भी बैठता है। सो इसकी वजह से वी गेट लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ओके, देन वी सी टर्माइट्स। टर्माइट्स ये जो एक कीड़ा है, ये जो है हमारे फर्नीचर और बुक्स को खराब करती है, ठीक है। और ये सिल्वर फिश भी सेम है, बुक्स को खराब करने वाला है। अब लोग बुक्स अगर एक महीने नहीं रख लिया तो उसके अंदर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये फॉर्म हो जाता है सिल्वर फिश। ये नॉर्मली क्या है कि बुक्स को खराब कर देता है। ओके, देन वी हैव लॉकस्ट cause damage to crops. Even lot of plants and crops are there. Okay, during cultivation we see खेती बाड़ी के काम में देख सकते हैं ये लोकस्ट आकर क्या कर देता है, क्रॉप्स को, सब फसल को खराब कर देता है, ठीक है। देन बेड बग्स, दे लिव, बेड बग्स मतलब कि ये भी एक कीड़ा है, वो हमारे बेड, सोफा, ऐसे मतलब कि कपड़े, मैट्रेस के अंदर, बेड के अंदर भी घुस जाता है। उसके द्वारा हम क्या हो जाता है, हमें भी बैठता है, ज्यादा शरीर में इचिंग भी होता है, ठीक है। उसके चीजों को हम देख सकते हैं। और ये सारे मतलब कि ये मोस्टली बेड बग्स जो बेड के बिस्तर में होती है। और देन हेड लेस, सो दे लिव ऑन एनिमल्स एंड आल्सो ऑन human, and they drink milk, they suck our blood, and they give harm to our body. Okay, and some other insects like bees and wasps sting us that cause swelling and pain. Okay, so these insects ऊपर हमारे शरीर में जब काटता है तो इसके ऊपर स्वेलिंग हो जाता है, हमारे शरीर में इचिंग भी होती है, खारिश और दर्द भी होने का संभावना है। और व्हाट आर द रेमेडीज टू प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स अगर बाय द वे अगर कुछ हो गया तो हाउ टू, हम इसका रेमेडीज क्या है, क्या क्या सोल्यूशन हम ले सकते हैं। ओके, अप्लाई आइस पैक्स ओवर द अफेक्टेड एरिया। सो जहाँ कहीं ये इंसेक्ट्स बाइट्स होती है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, आइस पैक रख सकते हैं, ठीक है। आइस पैक अफेक्टेड एरिया के ऊपर रखना है। Then we have lotions, calamine lotions. Okay, वो जहाँ
इन्फेक्शन होती है या इचिंग होती है उसके ऊपर लगा सकते हैं। और अवॉइड रबिंग एंड स्क्रैचिंग द अफेक्टेड एरिया। यूजुअली जहाँ कहीं ऐसे इंसेक्ट्स बाइट्स होता है उसको हम स्क्रैच नहीं करना या रब नहीं करना, ठीक है, उसको हम ज़्यादातर ये नहीं करना चाहिए। और टेक एंटी एलर्जिक मेडिसिन, उसके बाद एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेना बहुत आवश्यक है, उसके द्वारा हमारा दर्द और पेन कम हो जाता है। ओके, और प्रिवेंटिव मेथड टू कीप इंसेक्ट्स अवे, हम ये कीड़े को हमारे घर से मतलब कि आने से रोकने के लिए हम क्या करना है, वाटर कलेक्शन को हम अवॉइड करना, घर के आसपास में कहीं भी वाटर कलेक्शन होना नहीं देना। मैक्सिमम कहीं भी बारिश के समय में या कोई पुराने बर्तन वर्तन बाहर पड़ा होता है उसके अंदर पानी कलेक्शन होता है, उसको हमेशा क्लीन करना या जगह को क्लीन करके रखना है। और हमारे किचन और बाथरूम का जो ड्रेनेज पानी जो बाहर निकलता है उसके लिए एक चैनल बनाकर एक प्रॉपर आउटलेट बनाना है, ताकि वो आसपास में कहीं इकट्ठा ना हो जाए, उसके द्वारा नुकसान हो सकता है। और घर में नॉर्मली डस्टबिन यूज करना है और डस्टबिन को रेगुलरली वॉश करना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कीड़े फॉर्म हो जाते हैं। We should wear long sleeves clothes, use mosquito repellents. So normally what we have to do is we should wear long clothes. Okay, ये लंबा क्लोथ पहनने से, फुल बाजू फुल पैंट पहनने से ये मस्किटो बाइट से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, और वी कैन यूज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स टू कीप अवे इंसेक्ट्स। तो ये भी हमें मतलब कि कुछ मेडिसिन मिलती हैं और रेगुलरली हम हमारे घर के आंगनों बाहर मतलब कि जैसे ये फिनाइल वगैरह या अगर हम साफ करने के बाद पोछा लगाएं या कुछ ऐसे स्प्रिंकल करेंगे तो भी हमारे घर के अंदर ये चीजें कीड़े नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट the things. So here we have a exercise. Okay, insects. So useful insects, harmful insects. We have to write all these. So you can either हमारे lesson में हम देख सकते हैं। So useful insects, what are the useful insects? Harmful insects. इसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन को फिलअप करना, ठीक है। ये आप लोग खुद करनी है, ठीक है। और then next one is we have book exercise part. Okay, and here we have some other activities like insects have dash legs. How many legs are there? 6 legs. Okay, you can take it. And exoskeleton is made up of, what is that? Chittens. Okay, the dash sheds its skins many times to become a pupa, that is caterpillar. Okay, then which of these is useful insects? So that is silkworm. Okay, तीनों में ये हमारे लिए यूजफुल है। Which of these insects cause damage to crops? What is that? Locust. Okay, termite for this one furniture को. So ये locust जो है तो damage करता है। Okay, insects do not have what नहीं ये bones नहीं। Okay, bones, B-O-N-E-S, bones like us. Insects like butterflies and bees have a coiled feeding tube. Already we have learned in the first page. They have a coiled feeding tube. Dash is the middle part of an insect's body. That is thorax. Thorax. Okay. Thorax is the middle part of the insects. Okay. And only the dash ants can lay egg. Only queen ant can lay eggs. Dash feed on mosquitoes. What is that? Yeah, dragonflies feed on mosquitoes. Okay, and we should use, what are the things? Yeah, insecticides and pesticides to keep the insects away. Okay, these are the fill-ups you can do. Then there are some true or false. The insect's body is divided into 4 main parts. It is false because only 3 main parts: head, thorax and abdomen. Okay, thorax bears the wings and legs of an insect. True. So it is the middle part where you can find wings and legs. An adult butterfly lay eggs on the leaves of the plants. Yeah, that is true. Okay, and वो अंडे कहाँ देते हैं? Leaves के ऊपर, पत्ते के ऊपर. Okay. A larva slowly develop into a butterfly inside the cocoon. Okay.
So a larva, okay, slowly develop into uh, butterfly, okay, a larva. Pupa slowly develop into a butterfly. Okay, it is not the larva. So larva के बाद एक pupa stage है. Okay, then pupa develop into butterfly. So it is false. Okay, candles are made with beeswax. True. Okay, and we have some name of the following. A social insect. What is a social insect? And a hard outer covering of an insect's body is exoskeleton. You can find it in your book. Okay, exoskeleton. And these bees collect nectar from flowers. Who are they? They are worker. Okay, worker bees. Worker bees collect nectar from the flowers. Okay, this is not drones. We have to write worker bees. Okay, worker bees. Worker bees. Okay. Then a disease caused by mosquitoes are malaria. Malaria and dengue are caused by these mosquitoes. The medicine which are used to reduce itching and redness of the insects bites is anti-allergic medicine. You got it? So these are the names of the following you can write. Okay. And here we have match the following. Abdomen. Abdomen is the back portion of an insect's body. So this one is the true one. So you can connect here. Anthrills. Anthrills is the colonies of, okay, anthrills. Then silverfish. Silverfish destroys our clothes. Silverfish, it destroys, okay, books, and books also destroyed by silverfish, and kapda also they खराब कर देते हैं. Beeswax, fourth one is candle made of beeswax. Insect bites, fifth one is calamine lotion. So this is how you can make the match the following. Okay. Okay. Then question answers I will send you as a PDF form. Okay, I'll send you. Here we have a picture to study. Color the pictures of the insects given below and write whether they are useful or harmful. So एक एक इसको कलर कर सकते हैं और नीचे आप लोग इसका लिखना है कि ये यूजफुल है कि हार्मफुल है. वो एक होमवर्क आप लोग कर सकते हैं. ठीक है. Okay, fine. So that is all about the lesson insects. Got it?